So exactly 2 years ago हम इसी डाउनटाउन में शूट कर रहे थे MBA in USA Part 1 and now time for Part 2. Part 2. So start करते हैं. Congratulations. ये 2 सालों का पता ही नहीं चला. मैंने अर्पित की Thank you. throughout these 2 years, क्योंकि मेरा रूममेट रहा, मैंने struggles देखी हैं. How difficult was it to clear every single interview? एक internship लेना, even though I thought कि यार 5 साल experience लेके आते हैं students, but it's so hard to even get your first internship. तो आज बात करते हैं struggles and how come MBA made this journey worth it. 5 साल पहले एक्सपीरियंस लेना, फिर 2 साल MBA, फिर फाइनली जॉब. सो ओवरऑल स्टार्ट करते हैं स्ट्रगल से. सबसे पहले बताना कि US में आके 5 years ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस के साथ MBA का पहला एक्सपीरियंस प्रोडक्ट मैनेजर की तरह लेना कितना हार्ड था? It was very difficult. To be honest, you have hired people, right? You have seen people's resume. Would you take a salesperson for a software engineering role? No, not at all. Would his resume be filtered for this role? Yes. No, not at all. It will be filtered out. Yeah, it would be filtered out, right? Yeah. So वही मैं बोल रहा हूँ कि if you want to switch a career, it's a very uphill battle. Even I have 5 years of experience, it was not easy for me. I had to do so much networking, and I got my product management break when I worked for free for a startup. So I worked for 3 months without getting paid for a startup, so that I can have that experience and I can have that title on my resume. And once that title was on my resume, I started getting calls. Like earlier, before that internship, I was getting like 4 or 5 calls, but after that title was there, I got at least 20-25 calls. That's amazing. इसका मतलब ये है कि जो बेरोजगारी साइकिल होता है ना, बचपन में मीम्स पढ़ते थे, I don't have a job because I don't have experience. I don't have experience because I don't have a job. वो रियलिटी में ट्रू है. You have to get your experience for free at any cost. Free में हो या नॉन फ्री में हो, लेना ही पड़ेगा. Yeah. You have to make sure that somehow you can convince the recruiter that you have the skills required for the job. You work on the side as a product manager. You work on the side, do software engineering projects, and put that software engineering projects on your resume to show that you have those skills. So if you are looking for a change from your existing career, try to do something starting today. Talk to people and try to bring those skills on your resume somehow. Do free projects, work for NGO, do anything. Yeah, cold email to startups. Yeah. Do all these things. So somehow you have this experience on your resume, because without experience, it's very difficult for you to put your foot in the door. एंड अगर आपको मेरी और अर्पित की प्लेसमेंट जर्नी पसंद आ रही है, देन आपको मज़ा आएगा टू इंटरेक्ट विद मी लाइव ऑन एन अनअकैडमी क्लास एज वेल. लास्ट टाइम मैंने काफ़ी अनअकैडमी क्लासेस की हैं एंड मैनी ऑफ यू वोटेड for me to come back. तो इस कारण I'll be taking a live class this Saturday 7:30 PM IST, जहाँ पे I'll be answering all your questions and sharing how you can get started with preparation for placements as well. And दोस्तों, just like अर्पित और मैंने काफ़ी ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज दिए हैं, मॉक एग्जाम्स दिए हैं, सिमिलरली हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है मॉक एग्जाम्स देना. एंड अनअकैडमी Prodigy is coming with free test series, जहाँ पे you can get an opportunity to win up to 20 lakh rupees of college grant. And this test series is for everyone, चाहे आप क्लास 7th में हो, 8th, 9th, 10th, हाई स्कूल या फिर इवन कॉलेज में. बिकॉज इफ यू आर इवन इन योर टॉप 100 रैंक, तब भी आपको 50% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है, विच इज अमेजिंग. एंड फॉर एवरी टेस्ट यू गिव, आपको मिलेंगे अवार्ड्स लाइक मैकबुक एयर, आईफोन, आईपैड एक्सेट्रा, विच इज अमेजिंग. एंड सबसे अच्छी बात यह कि दिस टेस्ट सीरीज इज फॉर एब्सोल्युटली फ्री अगर आप मेरा कोड यूज करते हो Sync22 टू गेट स्टार्टेड. एंड काफी लोगों को ये भी लगता होगा कि IIT-JEE की प्रिपरेशन भी एक्सपेंसिव है, बट अगर आपको पेड टेस्ट प्रिपरेशन चाहिए, you can get it as low as 1499 rupees, but with my code 1350 rupees on the UA Lite program. So definitely check it out. अब 2 साल पहले अर्पित ने बताया था I wanted to be a people's person. 10 घंटे कोड नहीं होता था. Now are you a people's person? What you do now? अपनी responsibilities बताना. I'm a product manager. If people are not familiar with what product manager is, so I can give you a small example. Like currently iPhone 13 है. Next year iPhone 14 आएगा. ठीक है. एक प्रोडक्ट मैनेजर होता है जो डिसाइड करता है कि आईफोन 14 में क्या जाएगा. एनी पर्सन विदाउट थिंकिंग कैन से पुट द बेस्ट कैमरा इन द वर्ल्ड इन आईफोन 14. बट दैट इज नॉट गुड बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिकॉज अगर एप्पल ने बेस्ट कैमरा डाल दिया तो उसके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे. तो एक प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है, वो प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट में एप्पल आईफोन 14 में ये वाला कैमरा दो, इससे मेरे कस्टमर खुश होंगे, मतलब मेरा नुकसान नहीं होगा. एट द सेम टाइम मेरी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी.
So you work on the future of the product. So I am a product manager and this is my role. I have a list of features and I decide which features are going to be shipped next year, and then I work with my engineering team to make sure that those features are shipped. I work with marketing team so that I know what my customers want. And finally, if it's software or website, I work with design teams to decide what my website would look like. Awesome. For example, जैसे कि iPhone 13 में अभी सिर्फ बड़ा सेंसर आया, but Apple had the ability to give 8K cameras, पर next year के लिए होल्ड किया हुआ है. हाँ, Yeah. that is product strategy. Yes. वो product manager का decision होगा. हाँ. 100%. Awesome. Now, last but not the least, overall ये जो MBA का experience है, you did 5 years पहले job एक्सपीरियंस लेके MBA करना, फिर MBA में भी स्ट्रगल करना. ओवरऑल बाय कमिंग टू US, यूजुअली कुछ लोग स्कॉलरशिप पे आते हैं, लाइक अर्पित इज एन इंस्पिरेशन टू फॉर गेटिंग द स्कॉलरशिप, बट जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है उनके लिए वर्थ इट है टू टेक लोन्स टू कम एन MBA. एंड ओवरऑल MBA वर्थ इट है क्योंकि ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी है, जैसे कई जगह ऑनलाइन डिग्री मिल जाती है. सो ओवरऑल एक्सपीरियंस वर्थ इट है. टू बी ऑनेस्ट, मेरा भी MBA मोस्टली ऑनलाइन रहा है क्योंकि कोविड के कारण मेरा 4 में से 3 सेमेस्टर मेरे ऑनलाइन रहे, तो मेरा MBA भी काइंड ऑफ ऑनलाइन ही हो गया. लेकिन आई वुड से इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ लोन टू कम टू द US टू डू एन MBA, एम फॉर टॉप 10 स्कूल्स, बिकॉज वहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तुम्हारे लोन का ज़्यादा होगा. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मीडियम और लो लेवल स्कूल, ट्राई टू गेट एन स्कॉलरशिप, क्योंकि आफ्टर यू गेट इन टू दो स्कूल्स यू आर ऑन योर ओन. वो तुमको पढ़ा देंगे लेकिन तुमको जॉब लेने में ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे. सो उस समय अगर तुम्हारे पास लोन भी रहेगा और तुमको कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा, तो इट्स अ डबल वैमी. आई वुडंट रिकमेंड इट, बट आई वुड, इफ़ यू आर गेटिंग इनटू अ हार्वर्ड, शिकागो बूथ, कोलंबिया बिजनेस स्कूल, डेफिनेटली गो फॉर अ लोन. या ऑल्सो जैसे गौरव फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जब मैंने पहले इंटरव्यू की थी, ही ऑल्सो सेड 1+1 इज 2 एट एवरी स्कूल. हार्वर्ड जाओ या फिर MBA ऑनलाइन करो, सिलेबस सेम, एवरीथिंग सेम, बट मेन एडवांटेज ये हुआ दैट यू गॉट टू नेटवर्क. by staying in US, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है that you have the maximum number of people to interact with for recruiting, venture capital, investment, startup launch करना हो. जैसे मैं हार्वर्ड गया, मुझे भी वहीं पर यहाँ पता चला कि ओवरऑल एक स्टूडेंट की रेशियो टू अपॉर्चुनिटीज़ दैट इज मैक्सिमम. चाहे स्टार्टअप हो, जॉब करनी हो, कोई भी चीज़ करनी हो इन टर्म्स ऑफ टेक इज मैक्सिमम. तो दैट मेक्स इट वर्थ. नो, आई डेफिनेटली अग्री, बिकॉज मेरे जो फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्त बने थे, उसके बाद जैसे ही ऑनलाइन हुआ मेरे दोस्त ही नहीं बने. आई डिडंट मेड एनी न्यू फ्रेंड्स बिकॉज सब वर्चुअल थे, किसी से इंटरेक्शन नहीं होता था, तो फ्रेंडशिप नहीं बनती थी. तो जो कनेक्शंस बनते हैं वो इन पर्सन ही बनते हैं. ये वर्चुअल क्लासेस में तुम्हारी फ्रेंडशिप नहीं बनेगी. तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन ऑनलाइन MBA to build connection, no, that's not the way to do it. Yes. Now last question, how you prepared to be a product manager? Transition कैसे किया step by step? As I mentioned, सबसे important internship लेने की कोशिश करी. I reached out to a lot of people. I talked to a lot of product managers who are already working as product manager, and I asked them this question, like, this is my situation and what would you suggest? So first of all, I changed my resume completely. I looked back at my experiences and find out experiences where the skills which are required by a product manager is also needed, such as leadership skills, communication skills. So I highlighted those points on my resume. Earlier my resume was more tech focused with more technologies and everything written. So I focused reworded my resume to be more leadership oriented and communication oriented. That was one thing, and then I did a lot of mock interviews and I prepared my interview stories. Like, product management interview are of questions are of two types. One would be like, tell me about a time when you led a team. This would be a behavioral question. And second would be, okay, you are the product manager for YouTube, how would you improve YouTube? So these are the two major category of questions that they ask. So for category 1, I went through a list of like 30-40 behavioral questions which are most frequently asked, and found a theme and made like 10 stories. And whenever a question would be asked, I would just tweak that story and then answer the question for behavioral one. And for the second kind of question, I did online interviews. There's this online community. I joined that community and I did a lot of mock interviews. क्या नाम क्या है community का?
Stellar peers. Stellar peers. Anyone who's searching for how to be a product manager, the first result is stellar peers. क्या बात है. And best thing I've learned from Arpit is whenever you answer a behavioral interview question, 5W and 1H. Right? No, हमेशा. this is not behavioral question. That is for this question. How would you improve YouTube? So you have to ask 5W. Okay, what do you want to improve in YouTube? Okay, when do you want to improve? Which location do you want to improve? How do you want to improve? It is for mobile, laptop. These are the questions that you have to ask. So that is for a different question which you're answering. But even हर behavioral के लिए valid है. For example, if you ask me. Well, tell me about a time when you showed leadership, when you start asking like, which time do you want me to talk about? That doesn't make sense. That is right. For example, have you ever had a colleague who was difficult to work with? You will solve why he was sad. कॉलिग की प्रॉब्लम क्या थी, पहले उसकी प्रॉब्लम को रूट को फिक्स करोगे फिर ही आगे बढ़ोगे ना. तो 5WH थोड़ी हो रहा है. अगर ये मेरे से पूछेगा तो I would say give me 2 minutes, let me think about the time, and then in my mind I would frame the story, and then I would say, okay, let me tell you about a time when I was working for XYZ company and I was working in XYZ team, and here I had a challenge with a particular colleague. So I would give a first like a context and then go deep. I see. Now I got it. Awesome. So thank you so much, Arpit. There was so much learning. इतना कुछ सीखने को मिला. मैं खुद आजकल mock interviews देता हूँ कभी-कभी for software engineering. Learned a lot. Thank you so much. No worries. Awesome. And definitely follow him on Instagram to be connected with him. So thank you so much for watching. Thank you.